गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप. In this chapter we are going to see that how the material is of the different types things which we used in our daily lives. In number 1 they have given object around us. Let us read it what it says. We have seen that our food and clothes have so much varieties in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shape, color, and hues. As we can see that there are many objects around us. आपके आपके साइड आप जब बैठोगे तो आपके सामने भी कितने सारे ऑब्जेक्ट होंगे, उसको आप नोटिस करना. आपको क्या नोटिस करना है, कौन से कलर के वो ऑब्जेक्ट है, कौन से शेप है, उसका कौन सा शेप है, वो आपको नोटिस करना है. Look around and identify objects that are round in the shape. वो राउंड है कि स्क्वायर है, ट्रायंगल है, कैसा शेप है, वो आपको नोटिस करना है. Our list may include a rubber ball, a football, a glass marble. These things are round. As you can see, the football is round. The rubber ball is also round, and the glass marbles which the small children play are also round. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apple, orange, and an earth pitcher. ये सभी खाने की चीज़ें जो राउंड शेप में होती है. एप्पल तो आप देखोगे एप्पल भी राउंड होते हैं, ऑरेंज भी राउंड होते हैं, और अर्थन पिचकर वो भी राउंड होता है. सपोज वी वर लुकिंग फॉर द ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल. एडिबल मैंने क्या बोला था, एडिबल क्या, वो एडिबल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडिबल? वी हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर 1. Edible means eatable things which we eat, which we get nutrition to our body, which are known as edible. We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 में हम जो भी टेबल हमने फिल किए थे सभी लिस्ट इसमें आएंगे. We might also find that some of those round shape of objects we just listed out are also in this group. As we know that whatever we have done, whatever we have written, any vegetable or any fruit that comes in this group. Let us say we wish to make a group of objects that are made of a plastic. अब हमें कैसा ग्रुप बनाना है, जो भी प्लास्टिक के बने होते हैं उसका ग्रुप बनाना है. तो कौन कौन सी चीज़ प्लास्टिक से बनी होती है? बास्केट, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर्स एंड पाइप्स एंड मच मोर ऑब्जेक्ट्स. जो भी प्लास्टिक से बने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो बकेट्स, lunch box, toys, water containers and pipes. These all are made up of plastic. May find a place in this group. इस प्लास्टिक के ग्रुप में ये सभी चीज़ आएगी. There are so many ways to group objects. कई सारे वेज है, उसके कई सारे डिफरेंट पार्ट्स है जिससे हम ग्रुप बना सकते हैं. In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape or the material that are made from. हमने पहले शेप और मटेरियल से हमने ग्रुप बनाया था. All objects around us are made of one or a more material. कई ऑब्जेक्ट्स एक ही मटेरियल के बने हुए नहीं होते, पर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के बने होते. फॉर एग्ज़ाम्पल पॉट, तो पॉट प्लास्टिक का भी आता है, पॉट क्ले का भी आता है,
पॉट स्टील का भी आता है, वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन दैट. These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. These are the materials by which the things which the objects are made or things are made from it. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ द मटीरियल्स. ये मटेरियल जिससे हमें दिया है उससे भी ज़्यादा मटेरियल आप सोच सकते हैं कौन कौन से होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से एज अ नाइलोन, वी कैन से एज अ metal or copper, iron. In metal, copper, iron and many materials are also used in that. Now let us see activity number 1. Let us collect as many objects as possible from around us. आपके दिस साइड में जो भी चीज़ें हैं, let us collect that. Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. हम अभी तो हम स्कूल में नहीं आते, पर जब भी आप स्कूल आओगे तो ऐसा नोटिस करना कि कौन सा शेप है उसका, कौन सा कलर है, किस मटेरियल से बना होता है, वो आपको भी नोटिस करना है. What will we have in our collection? अपने कलेक्शन में क्या कौन कौन सी चीज़ है. तो फॉर एग्जाम्पल चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, soap, spoke of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. These things are there with us. Now we can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. Many things we cannot bring in our classroom. For example, wall, tree, door, tractor, road, etc. We cannot bring it in the school. Separate all the objects from this collection that are made from paper or wood. अब हमें क्या करना है, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो हमें पेपर और वुड में कलेक्ट करना है. दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स. वैसे ही हमने 2 ग्रुप में बांट दिया है. वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर और वुड. एक ग्रुप में कौन सा है, तो पेपर है और पेपर का बना हुआ आता है और वुड का बना होगा. While the other group has the objects that are made not from this material. और दूसरे ग्रुप में कौन सा होता है, तो जो भी ऑब्जेक्ट नहीं बना होता है वो दूसरे ही मटेरियल से बना होता है, उसको हम दूसरे कॉलम में बना देंगे, लिख देंगे. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. वैसे ही हमें जो भी चीज़ खाने की चीज़ है उसको भी सेपरेट बना देंगे कॉलम. लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक. लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1. जैसे आपको यहाँ पे टेबल 4.1 दिखाई देता है ना, वैसे ही हमें बनाना है. ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटीरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड अप ऑफ. आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से मटीरियल से वो बने होते हैं. If it would be fun to make this a large table, वो हमें मज़ा आएगा वो लार्ज टेबल बनाने में. Collecting information about as many objects as possible. आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी as possible as, जितने भी आपको ऑब्जेक्ट मिले उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी कि कौन सी चीज़ से बना हुआ है, कौन सा शेप है उसका, वो आपको पता होना चाहिए. It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teachers and parents to identify the material. अब आपको आइडेंटिफाई करना है मटेरियल, कौन सा मटेरियल चाहिए कौन सा नहीं, वो आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे टेबल नंबर 4.1 you can see that objects and the materials they are from which they are made up of. तो नंबर 1 that is plate, थाली. तो थाली किस चीज़ से बनी होती है, कौन कौन सा मटेरियल होता है. तो नंबर 1 that is स्टील की डिश भी होती है, प्लास्टिक की डिश भी होती है और ग्लास की भी
होती है। तो एनी अदर में सिरामिक की भी बनी होती है। ओके। Number two, they have given pencil. Like that, pencil is also made up of a metal and it is also made up of a plastic. Like that, you have to write another two. For example, I am writing here a boat which is made up of a metal, aluminum, metal, paper, and many boats are made up of a steel. Okay, like that, you have to also write another in the next column. Activity 2. Take a 4.2 list some common material. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly to these materials and list them in the column number 2. जैसे यहाँ पे 4.2 में टेबल दिया गया है मटेरियल और विच आर द ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ दैट मटेरियल. तो नंबर 1 दे हैव गिवन अ वुड. वुड से कौन कौन सी चीज़ बनी होती है, हमारे घर पे भी हो गए. तो नंबर 1 चेयर, टेबल, प्लग, बुलेट कार्ट एंड इट्स व्हील्स. और पेपर से कौन सी चीज़ बनी होती है, तो वी कैन राइट इज बुक, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर्स, टॉयज, कैलेंडर्स एंड मैनी मोर थिंग्स. लाइक दैट लेदर से जो भी चीज़ बनी होती है वो आपको यहाँ लिखना है. प्लास्टिक की जो भी चीज़ बनी होती है वो यहाँ लिखना है. और कॉटन से जो भी चीज़ बनी होती है या यहाँ लिखना है. लेदर से कौन कौन सी चीज़ होती है, तो वी कैन से एज अ पर्सेस, जो भी वुमेन्स यूज़ करती है वो पर्स. वी कैन राइट शूज़, वी कैन राइट हियर बेल्ट एंड एवरीथिंग. एंड in plastic you can write many things that like toys भी प्लास्टिक के बने होते हैं. नंबर 2 दैट इज़ मैनी ग्लासेस, ड्रिंकिंग ग्लासेस वो भी प्लास्टिक के बने हुए थे एंड मैनी मोर. एंड कॉटन वी कैन राइट हियर एज क्लोथ्स, we can write here clothes and many more. Okay, like that you have to write the 3 names of each. Now what do we find from this table? First we grouped object in many different ways. हमने जैसे यहाँ पे टेबल पे दिखा कि जो भी मटेरियल है उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हमने लिखे. We then found that objects around us are made up of a different materials. हमने देखा कि different materials से different object बने होते हैं. At a time, an object is made up of a single material. एक ही मटेरियल के ऑब्जेक्ट बने होते हैं, 2 मटेरियल मिक्स करके नहीं बनाते हैं. An object could also be made up of a many materials. दूसरे मटेरियल से भी बने होते हैं. And then again, one material could be used for making many different objects. एक मटेरियल से कई सारी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं. What decides which material should be used? वो कौन डिसाइड करेगा कि कौन से मटेरियल से हमें कौन सी चीज़ बनानी होगी फॉर मेकिंग any given object. It seems that we need to know more objects, different materials. हमें कई ऑब्जेक्ट्स हमको जानने चाहिए जिससे हम different types of material हमें पता चले. Now 4.2 properties of materials. These properties of material we will learn in next video. Thank you.